Okay, let's start our session here. Hello and assalamu alaikum everyone. First of all, I warmly welcome you all to our Women in Data Science event. I'm Hamna, your host for today, and I couldn't be more thrilled to have all of you joining us. Actually, the main motive of our session is to introduce you people about the data science and the AI world. So it doesn't matter आप लोग किस कौन से फील्ड से हैं, आर यू स्टूडेंट और नॉन आईटी बैक फ्रॉम नॉन आईटी बैकग्राउंड और आर यू अ सीजनल प्रोफेशनल और you are looking to move towards your data science or the AI field. So you are at the right place. We have our esteemed speaker Gul Jabin, and she will give us talk on the future trends of the AI. So let me introduce first the what is AI. हमारा आज का एजेंडा ये है, सबसे पहले हम विड्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद फिर विड्स टीम से मीट करेंगे, उसके बाद मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी, देन वी विल मूव टुवर्ड्स आवर मेन मोटिव ऑफ आवर इवेंट. So yeah, what is WIDS? WIDS is basically women in data science. So their main aim, or we can say their initiative, starts from the स्टैनफोर्ड प्रोग्राम इन 2015. सो उन्होंने 2015 में ये इनिशिएटिव लिया कि टू इंस्पायर एंड द एजुकेट डेटा साइंस वर्ल्ड वाइड रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर एंड ये एक्चुअली हमारी सोसाइटी में मेन इशू यही है कि जेंडर इक्वालिटी बहुत जेंडर गैप है. वुमेन्स का आईटी इंडस्ट्री में ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, उनको या तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होती हैं कि आइदर दे कैन डू दिस और नॉट, और दे आर नॉट सुटेबल फॉर दिस और दैट. सो विट्स इज़ दैट काइंड ऑफ प्रोग्राम जो कि मोटिवेट करता है और वुमेन्स को सपोर्ट करता है बाय प्रोवाइडिंग देयर रिसोर्सेज और डिफरेंट पॉडकास्ट सीरीज और डिफरेंट वेबिनार्स. सो ये 2015 में स्टार्ट हुआ था और अब तक 200 इवेंट्स हो चुके हैं और ये लोग हर साल वर्ल्ड वाइड एम्बेसडर सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम द रीजन. So yes, here is the WITS team. Margaret Gariston is the executive director, and Shelley is our ambassador program director, and Valre is the director and the workshop datathon programs. Datathon is basically ये data related होता है जो कि हमारी data science skills को boost up करने के लिए हमारा practical experience, इसमें हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमें नॉलेज गेन होता है. और या दिस इज द टीम ऑफ आवर विड्स प्रोग्राम. और ये एम्बेसडर्स हैं जो कि एम्बेसडर्स एक्चुअली वर्ल्ड वाइड सिलेक्ट होते हैं एवरी ईयर. or the responsibilities of the ambassador is to host event and to familiarize their community about the WIDS and about the data science industry and all that. So ये कुछ एशिया पैसिफिक रीजन के एम्बेसडर्स थे और अमेरिकन रीजन के एम्बेसडर्स हैं और वर्ल्ड वाइड एम्बेसडर सेलेक्ट होते हैं एवरी ईयर. So now I want to let you people a little bit about myself. I am Hamna and pursuing my bachelor's in the data sciences, and I am passionate about such kind of organization like जो I am a girl, this kind of girl जो who is always in search of न्यू अपॉर्चुनिटीज के न्यू लर्निंग अपॉर्चुनिटीज गेन कर सके और न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस हो. I am also a global ambassador at Women Tech Network, and currently I am leading as associate for Women in Tech at GDSC IUB. GDSC is basically Google Developer Student Club program. Or I am also leading as ambassador at WIDS. WIDS is basically Women in Data Science, और ये मेरी फील्ड से रिलेटेड था तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई इस प्रोग्राम के थ्रू और ज़्यादा मेरी लर्निंग गेन हुआ मुझे. और नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स आवर स्पीकर Gul Jabin.
She is a passionate data scientist and with a lot of inspiring story. हम story इनकी जुबानी खुद सुनेंगे तो हमें ज़्यादा motivation और ज़्यादा inspiration मिलेगी. और yeah, she pursued her master's degree in data science from the Leibniz University in Germany, and of course our event wouldn't be complete without our incredible speaker and who will enlighten us on the topic of empowering women in IT through NLP and AI technology. So yes, please join me in giving a warm welcome to you, Guljavin, and you all expert in the field of IT, and your passion for gender equality and innovation is truly impressive. And yeah, a warm welcome to you, Guljabin. Now the stage is yours. And yeah, we are excited to learn from your vast knowledge and experience. Yeah, yours now the stage is yours. Over to you, Guljabin. Thank you. Thank you, Hamna. First of all, thank you so much for inviting me on this event. I'm very excited to give you more knowledge about a data science and really want to talk about women in IT. It's my ambition. So we are going to talk about a lot of things today, and my vision and my aim is to empower you. So I'm very impressed कि काफी ज्यादा हमारी इस time audience में women है, or if men are joining, there is no issue. You guys should be also here too, because I'm not just going to talk about women in IT. I'm going to talk about AI, how you can get a job in AI, how you can start your career in data science, even though you're non-tech person. So I have just a small request कि अभी तो बेशक आप लोगों ने कैमरास ऑन नहीं किए हैं, अगर कर सकते हैं दैट इज गुड. और अगर क्वेश्चंस के टाइम अगर आप लोग कैमरास ऑन कर लेंगे तो एक इंटरैक्टिव सेशन हमारा हो जाएगा. तो मैं चाहती हूँ कि इस सेशन में हम सब एंजॉय करें सेशन को. आई डोंट वांट कि मैं यहाँ बैठी हूँ सबको एक लेक्चर दे रही हूँ. आई जस्ट वांट कि इट शुड बी अ इंटरैक्टिव सेशन. ठीक है. तो इफ देयर बी एनी क्वेश्चन यू गाइस कैन आस्क मी क्वेश्चन एट द एंड. और एक और रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज अपने स्पीकर अपने जो माइक्स हैं उनको ऑफ रखिएगा. और इसके अलावा लेट्स गेट इनटू इट. आई एम गोना शेयर माय स्क्रीन. Can you see my screen? Hamna, can you please confirm it? Yeah, is it visible? Now, can you see it? Yes, yes. A full screen, right? Yes. Is it visible? Okay, perfect. Okay, so let's start with it. So today we are going to talk about empowering women in IT through natural language processing and artificial intelligence. So my name is Guljameen. I'm a data scientist, and we are going to talk about how we can empower women in IT. And mostly we are going. Sorry. So mostly we are going to talk about. I'm going to share my story to give you inspiration about it. And I'm going to talk about the importance of women in tech, gender gap, AI and NLP. I'm going to talk about new advancements of AI, artificial intelligence, and how can you start your career in data science. So my story is that I have done my bachelor's in computer science from Comsat Islamabad. इसके बाद when I after my bachelor's मैंने जब काम करना शुरू किया after 2-3 months I realized I want to do my master's in data science, a very interesting field for me, and I relocated to Germany in 2017. I moved there, and there I pursued my master's degree in data science. So when I started my master's, जब आप वहाँ जाते हो तो of course आप में से बहुत सारे लोग होंगे क्वेश्चन सोच रहे होंगे कि कितना आसान है कि I went there and I started master. It was very easy procedure. It was very difficult procedure. बहुत सारी एप्लीकेशंस भरी, और ऑफ कोर्स टू मेक श्योर कि आपके पास एक्सपेंसेस भी हो इतने एक साल के. तो माय फादर सपोर्टेड मी फॉर द फर्स्ट ईयर, और आफ्टर फर्स्ट ईयर आई रियलाइज दिस थिंग that I cannot just depend on my father's money, or I need to be independent. I need to find a way to earn money in Germany. तो मैंने अपनी और जॉब्स पे काम करना शुरू किया. मैंने हर तरह की जॉब की वहाँ पे. मैं शेफ के तौर पे भी काम किया, मैंने मेकअप इंडस्ट्रीज में काम किया. मैंने एक टाइम पे 2-3 जॉब्स भी की टू मेक श्योर कि मेरे एक्सपेंसेस कंप्लीट हो रहे हैं. और एक और चीज थी कि बहुत सारे लोग जब बाहर आते हैं तो उनके अंदर ये चीज आ जाती है यूरोस को देख के या डॉलर्स को देख के कि वी जस्ट हैव टू अर्न डॉलर्स एंड यूरोस, बिकॉज के पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करके तो बहुत सारे बन जाते हैं. बट दे फॉरगेट their main aim behind it, why they are here in the foreign country.
So I wanted to make sure that I am getting experience. I'm just not doing odd job. तो उसके साथ मैं मास्टर्स भी करी थी, उसके साथ मैं प्रोफेसर्स के साथ 20 आवर्स वाली जॉब भी करी थी, लाइक पार्ट टाइम जॉब, जिससे मैं डेटा साइंस में एक्सपीरियंस भी बना रही थी। तो पार्ट टाइम मेरी और जॉब चल रही थी, पार्ट टाइम मैं यूनिवर्सिटी में भी काम कर रही थी, साथ में मास्टर्स भी करी थी। So my life was very very difficult. It was not easy at all. तो हर 3 months के बाद मैं अपने आप को एक गिफ्ट देती थी, और दैट वाज ट्रैवलिंग। तो मैंने पहला 2017 I guess 2018 में मैंने पहला ट्रिप किया सोलो, and after that I realized this thing and I was very scared. And my first trip I was solo traveling within Germany, और इसके बाद I started traveling, और I have traveled to 14 countries. यूरोप के अंदर इटली गई, मैं टर्की गई, पेरिस गई, I did all it myself. और इसके बाद after 3 years of getting all this experience, after completing my masters, I finally started working at a Capgemini, so one of the biggest IT company in the world. And there I started working as a data scientist. वहाँ पे मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम किया, मैंने MIT के साथ काम किया, मैंने बायर के साथ काम किया. I realized this thing कि जब भी मैं इस ग्रुप के अंदर होती हूँ, whenever I'm in the IT team, even though I'm in a foreign country, every time I'm the only women in the group, in the team, and that makes me sad कि हमारे यहाँ सिर्फ ये पाकिस्तान में इशू नहीं है कि हमारे यहाँ जो वो वुमेन जो है वो आईटी में आती नहीं है. दिस इट इज एक्चुअली अ ग्लोबल इशू. That's what I'm going to talk about in my next slides. So women in tech and time to close the gender gap, क्योंकि ये सिर्फ एक अभी गैप नहीं है, ये बहुत पहले का गैप है जो कि अभी तक चल रहा है. तो जेंडर गैप क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो women remain under represented the IT industry globally. So I told you already about it कि सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, यहाँ पे IT में लोग कमा रहे हैं, ग्लोबली इशू है. यूएस में, यूके में, यूरोप में, एवरीवेयर वुमेन की जो है सबसे कम जो है तादाद पाई जाती है इस फील्ड के अंदर. So according to National Center of Women Information Technology, only 26% of professional computing occupations in the US were held by women in 2020. तो अगर ये यूएस कहलाते हैं, जो कि एक एजुकेटेड मुल्क है, जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है, तो अगर हम पूरे वर्ल्ड का देखें या पाकिस्तान का देखें, तो आपको सोच लो कि कितनी परसेंटेज पीछे रह जाएगी. देखिए, आई गेस I would say in Pakistan it will be 5% or 6% maybe. So the gender gap is even more pronounced in leadership position and technical roles within the IT sector. So सबसे ज्यादा gender gap आ कहाँ रहा है? जहाँ पे leadership roles आ रहे हैं, जहाँ पे जो है वो technical roles आ रहे हैं, इन दो जगह पे सबसे ज्यादा gender gap है. सबसे ज्यादा औरतें कम पाई जाती हैं इधर. Why? What are the reasons behind it? We are going to talk about in the next slide. So gender stereotypes and social biases that discourage girls from pursuing their careers in technology. अच्छा, do you know this concept of डॉक्टर बहू in Pakistan? And it's very common कि लड़कियों को कहा जाता है कि उनके लिए अच्छी फील्ड ये है कि वो टीचर बन जाए या डॉक्टर बन जाए या घर में बैठ के ट्यूशन पढ़ा लें. तो ये उनके लिए ठीक है, बाकी उनके लिए ठीक नहीं है. बाकी मर्दों का काम है वो करें. आईटी क्या बात करें आप लोग, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. एंड इट इज एक्चुअली ट्रू. अभी 2 weeks पहले आई वेंट टू स्कूल, क्लास 8 के बच्चे थे, बच्चियां थी एक्चुअली, और I gave a talk over there and these girls listened to me. They were very inspired by IT. They didn't know कि IT है क्या. पहले मैंने उनको सारा समझाया. And then I asked them who wants to become a data scientist like me. और मुझसे एक लड़की खड़ी हुई and she was like, I want to become a data scientist but I can't. I was like, why? I have given you the whole lecture. And she told me कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा है कि IT भी नहीं जाना, डॉक्टर बनना है ताकि तुम्हारी शादी हो सके. तो the doctor बहू concept is very common. Just imagine कि एक क्लास 8 का बच्चा, जिसका 15 साल के बच्चे का क्या दिमाग होता है, और अगर आप इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट डाल रहे हो कि उसने शादी करनी है, उसको रिश्ता अच्छा मिल जाएगा इसलिए वो डॉक्टर बन जाए. So these are the stereotypes biases in our society that we need to change. So the lack of representation role models in the IT industry for women to aspire. जाहिर सी बात है, जब इतनी कम वुमेन होंगी आईटी इंडस्ट्री के अंदर, तो रोल्स भी तो कम इसमें बनेंगे ना. हमारे यहाँ आप देखा जाए पूरे पाकिस्तान में शिनो जहान आरा, शी इज अमेजिंग वुमेन, जो कि उनका अपना इंडस्ट्री वो चला रही है आईटी की पाकिस्तान में पूरी. उन्होंने स्टार्टअप्स शुरू किए यहाँ पे. दे आर प्रमोटिंग वुमेन इन आईटी एंड ऑल. So that is amazing thing she is doing it in Pakistan. So I don't see anyone else. I only see
कि लोग जो है किसी और फील्ड्स को ज्यादा प्रेफर दे रहे हैं और आईटी को नहीं दे रहे हैं प्रेफरेंस बिल्कुल भी. So the unconscious biases in hiring practices, workplace culture, and make greater balance for women in tech. One more thing, I'm not degrading man over here. I'm just telling you these things कि आप में से कितने लोग हैं जो कि जो जितने भी मर्द हैं इस टाइम इस सेमिनार में, just wanted to ask this question to them. कितना पसंद करेंगे लोग कि एक औरत उनको लीड करे? आई गेस बहुत कम लोग करेंगे, कोई सुन ही नहीं सकता. यही एक प्रॉब्लम है कि लीडरशिप रोल्स पे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वर्ल्ड में भी, पूरे वर्ल्ड में ही यही हो रहा है कि लीडरशिप रोल पे औरत को आने नहीं देते बिकॉज़ उनकी उनकी ईगो कुछ होता है कि एक औरत हमें कमांड करेगी. तो we need to change this, gender gap, these biases, this mentality. This is 2003 and we need to admire women's career in any field, not just in IT, in every field. And women need this recognition कि उसको इम्पोर्टेंस मिले, वो क्या करना चाहती है. हर कोई इसको ना बता रहा हो कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, क्योंकि तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम ये कर लो. तो हमें इस चीज की जरूरत है. तो इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी इंक्लूजन से होता क्या है, जब जब औरत और मर्द की जेंडर गैप ये कम होता है, जब औरत और मर्द दोनों सोसाइटी में काम करते हैं. आई वांट टू गिव यू वन एग्जांपल. जर्मनी में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, उसके बाद उनके ज्यादातर मेन जो वॉर में मारे गए थे और उनकी औरतों ने उस मुल्क को दोबारा से खड़ा किया था. दैट इज एन अमेजिंग एग्जांपल दैट women can do a lot. Women are multitaskers. They have critical they have this ability to think critical. So we need to increase innovation. So diversity and inclusion foster a variety of perspective and ideas, leading to more innovative solution in the process and better decision making. Because you are including the diverse voices and viewpoints that enhance decision making. And you're improving the business performance. क्यों उससे क्यों हो रही है business performance, क्यों decision making बेहतर क्यों हो रही है? कि आप उसमें दोनों genders के perspectives को ला रहे हो, दोनों gender के ideas को ला रहे हो. Women का अलग भी होता है थिंक करने का और मर्द का अपना एक अलग भी होता है थिंक करने का. तो when they comes together, they can bring more innovation in the company. So these are things we need to encounter, and people are ignoring these facts. So they shouldn't. So this was more so these 3 slides are more about to empower you all girls, and to tell you that how beautiful you all are and you can do a lot like me. I was just a 22 years old girl when I moved to Germany, and I became independent there. I realized there that who I am and who I want to become, and that can be you too. So now I'm moving towards the next slide, and we're going to talk about artificial intelligence and natural language. So many people were impressed, I'm sure, about data science, and many people are here to know कि क्या है data science, AI है क्या, और जो नई चीजें आ रही हैं, what is this? Because there's a hype about ChatGPT nowadays. Everyone is talking about it, right? So let's move towards next slide. So my experience is more into NLP. NLP is natural language processing. आप क्या करते हो, टेक्स्ट के साथ काम करते हो और टेक्स्ट के ऊपर मॉडल्स को ट्रेन करते हो, मॉडल को बहुत सारे डेटा के साथ, टेक्स्ट डेटा के साथ ट्रेन करते हो, देन यू मेक अ सिस्टम्स आउट ऑफ इट. दैट्स व्हाट आई हैव डन फॉर बायर. बायर इज बेसिकली फार्मास्यूटिकल कंपनी. मैनी ऑफ यू नो, आप उसकी दवाइयां भी खाते हो, कि मेडिसिन भी खाते हो, उसके लिए मैंने 2 बिग सिस्टम्स बनाए थे NLP में. तो व्हाट वी कैन डू, हम इस NLP सिस्टम्स की क्या कर सकते हैं, या हमारे क्या कर सकते हैं कि आप उसको क्वेश्चन दो, वो आपको आंसर करते. आपको स्पीच रिकॉग्नाइज, आप अपना आईफोन यूज कर रहे हो या जो भी गूगल कर रहे हो, आप सीरी को कहते हो सीरी प्लीज डू दिस डू दैट. हु इज डूइंग दैट? AI इज डूइंग दैट. आप एक पूरे टेक्स्ट को चैट जीपीटी में डालते हो, समराइज करते हो, हु इज डूइंग दैट? AI इज डूइंग दैट. स्पैम डिटेक्शन आती है, अपनी मेल खोलते हो, कुछ मेल स्पैम में चली जाती हैं, वो कौन काम कर रहा है? वो AI काम कर रही है. सेंटिमेंट एनालिसिस, किसी रेस्टोरेंट ने अपनी वेबसाइट खोली है, उसमें लोगों ने रिव्यूज डालना शुरू कर दिए. गूगल पे भी लोग रिव्यूज डालते हैं. यू एक्सट्रैक्ट दोस रिव्यूज, यू ट्रेन द मॉडल ऑन दैट. नेक्स्ट टाइम रिव्यू विल कम, वो नेगेटिव पॉजिटिव है, नॉर्मल है, जो भी है वो डिटेक्ट हो जाएगा. फिर मशीन ट्रांसलेशन, यानी कि लाइक कोड को, टेक्स्ट को कोड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कोड को टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. कोड समझ नहीं आ रहा, यू पुट इट इन द चैट जीपीटी एंड टेल यू कि व्हाट इज इट अबाउट. ठीक है. So these are all things which AI is doing right now, and I want to talk about it more. So the growth of artificial intelligence over years is the main thing you guys should know, that 2017 में इससे पहले हमारे पास machine learning algorithms थे,
फिर ट्रांसफॉर्मर्स आए, ट्रांसफॉर्मर्स और ज़्यादा डेटा पे ट्रेन हुए, फिर बर्ड आए, बर्ड जो और ज़्यादा डेटा पे ट्रेन हुए, पर उनके पास मेमोरी भी थी, फिर जीपीटीज़ आना शुरू हुए, ठीक है? दीज़ आर द मॉडल्स जो मैं बात कर रही हूँ ना, ट्रांसफॉर्मर, बर्ड, जीपीटी, ये सारे मॉडल्स की हुई और अब 2023 में जाके हमारे पास जीपीटी 4 आ गया है, जिसके बाद चैट जीपीटी जो है जीपीटी 3 को भी यूज़ कर रहा है, जीपीटी 4 को भी यूज़ कर रहा है, एंड इट इज़ गिविंग यू एन अमेजिंग रिजल्ट, वर्ल्ड इज़ गोइंग क्रेज़ी अबाउट इट। पूरी इंडस्ट्री चेंज होके एआई के पीछे लग गई है। ठीक है? और द इम्पैक्ट ऑफ चैट जीपीटी का क्या हुआ कि अब देखो जब स्पॉटिफ़ाई आया, ड्रॉपबॉक्स आया, फेसबुक आई, इन्होंने सबने एक कंपैरिज़न मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि टाइम टू रीच 1 मिलियन यूज़र, कि सबसे ज़्यादा चैट जीपीटी के 5 दिन में 1 मिलियन यूज़र्स हो गए और बाकी नेटफ्लिक्स, किकस्टार्टर, एयरबीएनबी के इनको 2.5 इयर्स लगे। तो दिस शोज़ यू कि हाउ चैट जीपीटी गेन अटेंशन जस्ट इन 5 डेज़। एंड चैट जीपीटी ने अब जो हमारे पास है, इसने कितने सारे टेस्ट जो है पास कर लिए हैं। वर्बल, जीआरई, ठीक है? और यूनिफॉर्म बार एग्जाम, मैथ, एलसैट, SAT exam, psychology. So all these exams they're passing and they're actually passing on 99%, 93%. They're reaching the accuracy of 99. I mean, the percentage result of 99%. That is amazing that how smart they are. So you can see yourself that how the AI is evolving. और अगर आप AI में पीछे रह गए, अगर आपको ChatGPT का नहीं पता, if you are a non-tech person, then you are behind. It's time to grow. It's time to make sure that you're learning these things with the pace because AI is growing really fast right now. Even being a data scientist, I'm worried about it. Every time I am actually looking at articles and making sure that I'm up to date because that is my job and I have to be up to date on it, right? So चैट की जो हाइप है वो इतनी ज्यादा हो गई है कि 2030 में कहते हैं कि उसका मार्केट साइज जो है वो इतना बिलियन डॉलर्स में हो जाएगा। यू कैन सी कि 2021 में कहाँ पे था, 2030 में कितना हो गया। इसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस जो है यूएस के ठप भी हो गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट दे आर नॉट यूजिंग एआई। आई नो पर्सनली कंपनीज, ठीक है, मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो यूएस के लिए काम कर रहे हैं, आई एम आल्सो वर्किंग फॉर यूएस कंपनी, वहां पे भी आई एम ब्रिंगिंग एआई फॉर देम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ऑल। और बहुत सारी कंपनीज ने अपने बाकी सारे प्रोजेक्ट बंद कर दिए हैं एंड दे आर जस्ट वर्किंग ऑन कि हम चैट जीपीटी को कैसे अपने सिस्टम में इन्वॉल्व करें, हम सारे टास्क को कैसे इन्वॉल्व करें, हम ये कैसे करें। तो दिस इज अ हाइप। अगर वो कंपनीज एआई की साइड पे नहीं आएंगी, इवन नॉन टेक कंपनीज की मैं बात कर रही हूँ, अगर वो एआई की साइड पे नहीं आएंगी तो दे विल लीव बिहाइंड, and that is the reason even you will leave behind if you're not coming to this field. So that's very important to stay up to date. And how you can start a career in the data science, how you can stay up to date, these all the questions are coming to mind, I'm sure, right now. So I'm going to give you some innovative slides in next slides, and you're going to see that how you can do it all. So let's break everything in points, okay? And let's start that how you can start your career on in data science. So first of all, क्या होता है पहला स्टेप, आपको कोडिंग आनी चाहिए। कोडिंग क्या है, आर भी यूज होती है डेटा साइंस के अंदर, पाइथन भी यूज होती है। पाइथन जो है आप सीख सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज हैं उसकी कोर्सेज की मैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगी। जब आपको कोडिंग आ जाएगी, व्हेन यू नो हाउ टू यूज पाइथन लैंग्वेज, इट्स अ कोडिंग लैंग्वेज, देन आप पहला स्टेप लोगे, आप देखोगे डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा, देन यू विल टॉक अबाउट मशीन लर्निंग का कोर्स लोगे, फिर आप डीप लर्निंग का कोर्स लोगे, फिर आप मशीन लर्निंग ऑप्स का लोगे कि हम मॉडल्स तो बना लेंगे, फिर उनको इंटीग्रेट कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो अब ये एक पाथ मैंने आपको नॉर्मल से दिखाया, सो डोंट फील प्रेशराइज्ड, डोंट फील लाइक यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। आई एम गोइंग स्टेप बाय स्टेप in and I'm going in the next slide, I'm going to tell you how you can learn all this, okay? So getting started with data mastery, and if you cannot afford a master degree right now, you think that you cannot do it, first of all you can do it in Pakistan, बहुत सारी universities offer कर रही हैं, ठीक है, or even you can do it in Germany में ये होता है कि आप ये बता सकते हो कि जर्मनी में भी आप जा सकते हो, एचएससी के स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, and there are many scholarship platforms on the Facebook which you can join and you just apply for the masters
degree, ठीक है, और लोग जा भी रहे हैं, saw people going on a scholarship, they don't have to pay anything and they're just going on scholarship. I didn't go on scholarship, I did everything myself, और मैंने आपको पता है और जॉब्स की सब कुछ मैंने वहाँ पे खुद ही किया था, पर वहाँ जाके of course life is tough and it's hard, you have to be prepared for that. So getting started at data science, if you still want to learn and you don't want to go for masters, you can open a Udemy. First of all, I'm actually showing you this free Python courses tutorials. You can start taking these. And if you're not comfortable with it, you can start some lecture on the YouTube. YouTube is a great platform to learn. And you do Udemy, Coursera, DataCamp. You can go on these platforms and you can learn the data science very well. You can take these courses because in this presentation, I can give you an idea of how you can pursue the career in data science. But I cannot teach you data science just in 1 hour. So for that, you need to make an effort. So इसके लिए जरूरी है कि you should go and look at this and these I will share the slides with Hamna and she can share with you guys. और इसमें आप लोग देख सकते हो कि आप कैसे courses कर सकते हो. एंड देन डेटा साइंस टूल्स की बात हम करते हैं. अब इसमें डिफरेंट टूल्स होते हैं. ऑफ कोर्स नॉन टेक दोनों लोग हैं. हम जुपिटर यूज करते हैं. इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको फॉरन से लाइव ही आपको रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं आपके सामने. आई रियली लाइक जुपिटर. पाइथन आपको आनी चाहिए. numpy, scipy, they're all the python libraries which you will definitely going to learn when you will take this Python courses and data science courses. Then you would know what is Kira, what is Scikit, what is TensorFlow, what is PyTorch. So all the things I'm saying right now, you will learn it eventually. Just go slowly, take your time, and don't take pressure कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती हूँ. All can do it. अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा दिमाग दिया है और बस उसके अंदर आपने खुद ही अपने आप को आप हौसला दे सकते हो या अपने आप को कह सकते हो कि आई कैन डू इट. तो आप अगर आपसे कोई चीज नहीं भी लर्न हो रही 2 दिन के बाद, यू लाइक मैं छोड़ रहा हूँ, देन रोज कोशिश करो कि आप 10 मिनट्स से शुरू करो या आधे घंटे से शुरू करो उसको लर्न करना. वन डे यू विल बी परफेक्ट इन दैट. सो 2003 की डेटा जॉब्स चाहिए आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, डेटा साइंस के डिफरेंट टाइटल्स हैं. या इंजीनियर्स होते हैं, डेटा इंजीनियर्स होते हैं, डेटा साइंटिस्ट होते हैं, डेटा एनालिस्ट होते हैं, मशीन लर्निंग साइंटिस्ट होते हैं. या इंजीनियर्स और डेटा साइंटिस्ट एक जैसे ही होते हैं. उनका टाइटल्स में कोई इतना फर्क नहीं है. दे बोथ आर वर्किंग ऑन द डेटा. दे बोथ आर वर्किंग ऑन द इमेजेस डेटा, वॉइस डेटा, टेक्स्ट डेटा, व्हाटएवर यू वांट. एंड देन डेटा एनालिस्ट होता है, ज्यादातर डेटा का एनालिसिस कर रहा होता है, देखता है कि किस तरह का डेटा है और उसमें कितनी एंट्रीज हैं, कितनी रोज हैं, कितनी कॉलम्स हैं, किस टाइप का डेटा है, क्या ट्रेंड्स हैं, उसके अंदर क्या हाइप है एंड ऑल ऑफ दैट. सो मशीन लर्निंग साइंटिस्ट का भी मोस्टली इतना ही ऐसा ही काम होता है जितना डेटा साइंटिस्ट और एआई इंजीनियर्स का होता है. So I want to break down this whole thing just step by step. ठीक है. सबसे पहले कलेक्शन में अगर हम जाएं तो कलेक्शन का यहाँ पे मतलब है कि आप डेटा को कलेक्ट करते हो. डेटा आप कहाँ से कलेक्ट कर सकते हो? डेटा आप विकिपीडिया से कलेक्ट कर सकते हो, डेटा आप ट्विटर से कलेक्ट कर सकते हो, डेटा कंपनी अपने अंदर जो उसकी फाइल्स हैं या कोई डेटा है एक्सेल शीट तो वो कलेक्ट कर सकती है. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम यू आर मेकिंग. सो उसके हिसाब से आप डेटा को कलेक्ट करोगे. तो ये काम सारा कौन कर रहा होता है? डेटा इंजीनियर्स कर रहे होते हैं. फिर डेटा एनालिस्ट कौन होते हैं? जो कि डेटा को लेते हैं और उसमें फाइंड करते हैं कि कितनी मिसिंग कॉलम्स हैं, कितने मिसिंग रोज हैं. डेटा एनालिस्ट ट्रेंड्स उसमें देखते हैं, उसमें सारे डेटा को क्लीन करते हैं. देन मेक श्योर कि जब ट्रेनिंग में जाए तो मॉडल गार्बेज ना लर्न करे, रैंडम चीजें ना लर्न करे, बल्कि वही चीज लर्न करे जो उसको दी जाएगी. तो जब हमारे पास इसी तरह एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस पूरा हो जाता है, फिर हम मॉडल को बिल्ड करते हैं एंड उस पर हम मॉडल को डेटा के ऊपर ट्रेन करते हैं, फिर मॉडल को डिप्लॉय करते हैं, फिर वो एपीआई को यूज करके जहां भी आपने मॉडल लगाना है आप वो लगा सकते हो. And then I'm going to talk about again evolving role of women in IT leadership opportunities. So women are increasing and taking on leadership role in IT industry. पहले से बेहतर है. और according to a survey by Harvey Nash, KPMG, the percentage of women in IT leadership growth globally increased for 9% in 2019 and 12% in 2020. The women are actually coming inside of this. And the World Economic Forum Future of Jobs Report 2020 indicates that technology continues to advance and there will be increasing demand of skills such as critical thinking, creativity, emotional intelligence, all. And you know that this is happening right on the chat GPT. कि हर तरह का उसमें टेक्स्ट जा रहा है, उसमें आपको इमोशनल इंटेलिजेंस भी चाहिए, क्रिएटिविटी भी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग भी चाहिए. So women have all these powers. You guys are amazing and you have these powers. So
need to come in AI and you need to be a part of data science world and you need to learn this all. And then strategies to overcome the challenges you feel as a woman. You need to promote diversity and inclusion initiative with the organizations and including policies that support the equal opportunity and pay equity, flexible work arrangement. So how you can do that? It's not about कि आप बस एक lecture ले लो and that's it. You're going to empower other women. ठीक है हमारे यहाँ it's very important कि women should support women. कि अगर आपके साथ आपके घर में भी कोई औरत है, आपकी बहन है, आपकी भाभी हो सकती हैं, या आपकी अम्मी है, या आपकी सास हैं, जो भी हैं, you need to start with yourself. You need to support them. Just not about supporting in IT. It's about everything. You being kind to other person. और जब आप दूसरों के साथ ऐसे होते हो, तभी आपके अंदर एक चेंज आप खुद फील करते हो. और जब आप यहाँ से शुरू करोगे और when you will start talking about कि आईटी में लड़कियों का भी करियर है, आईटी में इतनी पेज हैं और आपको पता है कि अभी डॉक्टर्स और बाकी लोग इतनी पे उनको नहीं मिलती हो जितनी एआई इंडस्ट्री को पेज मिल रही है. ठीक है I want to add something over here कि when I was leaving, I actually left Germany last year and I moved back to Pakistan and I started my career over here. uh, I actually worked in a company. वहाँ पे मुझे फील हुआ कि जेंडर गैप भी फील हुआ मुझे वहाँ पे ये भी फील हुआ कि I'm a woman, so nobody, I cannot lead the project. So there were things which I have faced. और सबसे ज़्यादा ये था कि स्ट्रेस की एक ऐसा स्ट्रेस मेरे लिए क्रिएट हो गया था कि I left the job and I was like, I'm gonna find the place where I will like to work. And finally, after taking a break of months, फिर मैंने इस टॉक्सिक जॉब को छोड़ा और ढूंढी जॉब. And I'm now working for a US company, and there the environment is nice and everything, and I can see the equal opportunity of women. They are supporting women in IT and all. So I want to work for such kind of company. And there are many possibilities in Pakistan too. लोग कहते हैं कि आप बाहर छोड़ के क्यों आ गई, इतनी अच्छी पे थी, इतनी अच्छी कंपनी में काम करी थी, you're working in a top organization. पर ये एक बात हम सब कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात बुरे हैं, ये है, वो है, यहाँ पे ये नहीं है, but so who is going to take care of this country? So you should also think about these things, that how you can bring innovation, how you can bring change in the society, in Pakistan especially. When I'm in Pakistan, my motive is to give these talks to us and to tell them that how amazing this field is. Okay? And encouragement, mentorship programs, and networking opportunities. That's what I'm doing. I'm here to support you guys. Raise awareness about unconscious bias and foster inclusive work environment that value and celebrate diverse perspective. ठीक है कि हमें ऐसे ही माहौल बनाना है, ऐसी जगह बनानी है जहाँ पे औरत फील सेफ करे, उसको चैलेंजेस ना फेस हो. ठीक है और सबसे बड़ी वजह औरत का करियर आईटी में बिल्ड नहीं हो पाता कि उसको आई एम एक्चुअली 100% एग्री विद दिस कि व्हेन यू आर कोडिंग यू नीड अ फुल अटेंशन फॉर इट. और जब आपको कुछ साल गुजर जाते हैं तो फिर अब आप उस चीज के एडिक्टेड हो जाते हो और यू गो टू द लीड रोल और फिर चीजें चेंज होती हैं आहिस्ता आहिस्ता के करियर में. ठीक है पर सिर्फ औरतों को इसलिए आईटी के रोल्स में दिए जाते हैं कि they will get pregnant and they will get married and then they will get pregnant और फिर 3 months की लीव पे चली जाएंगी. और to be honest, I actually got married last year and recently I didn't get a job. उसकी पूरे में जॉब मुझे मिल सकती थी. I was talented. I had an amazing experience. सब कुछ था, सिर्फ जॉब रिजेक्ट किया कि I'm married just because of this. So I was very disheartened by that. There's a 2020 people are still thinking like that. So there, all the men in this call, in this seminar right now, I just want to tell you that you need to support women. Women life is not easy. You need to think about it कि it's not easy कि आप अपना पूरा करियर बनाएं, इसके बाद you have to get married and you then make sure कि आपके बच्चे भी होते हैं, आपने उनका भी ख्याल रखना है. So there's responsibility of the women, but we need to talk about work-life balance. We need to talk about कि women need support in all of this. और हम सबसे बड़ी बात कि एक घर का ख्याल रखना, एक बच्चे का ख्याल रखना सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं है, मर्द की भी ये जिम्मेदारी है कि वो भी ख्याल रखे. ठीक है तो we need to talk about all these things because this is important. और हमारे अंदर डाइवर्सिटी और सब चीजें इसी तरह आ सकती हैं. हम तभी चेंज होंगे जो अपने आप को चेंज करेंगे. तो आई एम वेरी हैप्पी तो जिन लोगों ने, especially men who joined this call and joined the seminar, I wanted to tell you that it would be an amazing for us that if men will think like that कि women need support, we need to support women कि सिर्फ
मर्द का करियर इम्पोर्टेंट नहीं है, वुमेन का करियर भी इम्पोर्टेंट है. तो we need to raise this awareness among women, and that's what I want to do. I want to talk about your challenges with you. So that is the reason I in the next slide I want to talk about one more thing. I have this group, actually this network, Rise and Shine Women's Network, in which actually I want women to come and talk about it, how they feel, you know, और अपने करियर के बारे में बात कर सकते हैं कि कौन से उनके ऐसी ऐसी चीज है जिससे वो आगे नहीं जा पा रही हैं, क्या उनके बैरियर्स हैं. So I want to talk about it, okay? Or that's why I have started this group to make sure that women come in it, and we will talk about each other, everything, and we're gonna make sure that you empower. So that's what I want to do, because we need each other and we need to be supportive. And then I have two accounts, Travel with Gul and Tech with Gul. In Travel with Gul, I actually mostly post travel stuff, and in Tech with Gul, I mostly post technical AI data science stuff. You guys can follow me on this. You guys can also contact me on this. And if you want to be a part of Rise and Shine Women's Network, just contact me on LinkedIn. I will add you there, and I will add you in the group. So mostly it's my WhatsApp group. So then we will do the sessions, and I will help you to empower. So that's all from my side, and I'm handing over to Hamna. If you guys have any questions, and I want to have interactive session, please guys, please turn on your cameras and let's talk about it. That's all from my side. Thank you so much, Guljaveen. It was seriously full of motivation and inspiration for all of us, and it was a fantastic talk about empowering women in IT, in the field of IT, and all that. And yeah, you people have if you people have any question, you people can ask. Feel free to ask. कोई क्वेश्चन पूछ ले. चैट में कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. मोहम्मद वेट Mohammad Asad Ishfaq, can you give us a complete roadmap of data science? Gul, your mic is off. Okay, can you hear me now? Yeah. Okay, perfect. Okay, so roadmap, I already talked about it, but I'm going to talk about it again. तो आपको वही मैं बात करी थी कि you have to start with Python, और Python के बाद the coding language, right? And then next step यही है कि आप अपने data science के courses select करो, start with a very low level, machine learning से start करो. Once you are done with it, then आप deep learning के अंदर learn करो. फिर इसके बाद आप GPTs पे जाओ, फिर आप chat GPT पे जाओ. So then this is how you can do it. Got it? So I'm gonna share these slides with you, Hamna, and Yeah, you guys, you can share these slides with the people in the chat, and these guys would know how to follow it then. yeah, sure. किसी और का कोई क्वेश्चन है तो you people feel free to ask. Then we move forward. I guess no more questions. Please don't feel. I just want to say, don't feel shy. This is an opportunity for you all to speak and talk about yourself. So please turn on your mic, and if there's any question you want to ask, please go ahead. Okay, we have someone. Yeah, Maryam. Okay, Mariam. Assalamualaikum. Mariam Ahmed. Okay. I'm Mariam. I want to ask, we have 3 months of semester break, and I want to do something productive in these 3 months. Can you hear me?
Yes, you are audible. Please, I can hear you. Do you want to do something productive in data science? Actually, I'm doing IT. Okay. I've done my second semester of IT recently. Okay. All right. So, Mariam, it depends on what you want to learn. So, I would suggest you, because NLP is actually, raising every day, and AI is actually, about ChatGPT and all. So, I would suggest you to look into that how ChatGPT works, look into LangChain, AutoGPT, and do such kind of courses. So, I can give you a list of courses you can do, or maybe it's better if you are totally in the start of your career and don't know how to code. First of all, learn how to do a code in Python and then learn the fundamentals of data science. Maybe take some course on Udemy and Coursera. And then I would really, advise on this that please, learn about ChatGPT and the new, world of this innovation, because it's growing rapidly and we need to know about this all. Okay, thank you so much. You're welcome. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं यहाँ पे सॉरी आपकी एक बात कट करना चाहती हूँ। आई एम एन एआई स्टूडेंट। तो लाइक जैसे अब आप सबको यहाँ बता रहे हैं कि यू शुड स्टार्ट पाइथन, तो Uswa, your mic turned off. मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। यस यस यस, अब आ रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ So your mic is off, you're not audible. I'm sorry. आज मैं बस टेस्ट देना चाह रही थी कि जैसे मैं आई एम स्टूडेंट ऑफ एआई, तो जब स्टार्टअप आप एआई का करो तो पहले आप लोगों को C++ में कोड करना आना चाहिए। अगर आपको C++ में कोड करना आ गया तो आप आगे एआई को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। Okay, डायरेक्ट पाइथन स्टार्ट। Uswa, I guess I'm telling you from experience because I have 6-7 years of experience. So I started with a Python. I've already learned C++ when I was, I guess, in my bachelor's degree. And but in data science, specifically, we are talking about data science, then we need actually Python for that. Yes, ma'am. We need actually Python. But before Python, we should suggest कि हमें C++ में IS कोड करना आना चाहिए। अगर हमें कोड करना आ जाएगा तो हम इसको बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। फॉर बिगिनर्स, मैंने अपनी लाइफ में करी थी कि मैं डायरेक्ट स्टार्ट करी तो थोड़ी सी क्रिटिकल हुई थी कि समटाइम्स, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, और वो है समटाइम्स हमें किसी चीज की लाइक जरूरत होती है। मैं आपको बताना चाही थी कि अगर बिगिनर्स हैं तो एआई भी कर रहे हैं तो यू शुड स्टार्ट, क्या कहते हैं, C++, देन यू शुड स्टार्ट पाइथन। So you are actually speaking from your own experience. So everyone has, different way of learning things. So this is this work for you. That's really good. If it's going to work for someone else, that's good for them. But I'm actually telling you for my experience. But good that you have mentioned. Thank you for your question. Yeah, thank you, Uswain and Mariam, for your questions. Anyone have question? Then feel free to ask. Any more questions? Okay, I guess no more question. So we no more question. Yeah. So once again, thank you so much for such an amazing session. I want to express my sincere gratitude to you, Guljabin, and thank you for such an amazing talk. And moreover, your inspiring personal story that you talked about your travel of
14 countries, and your also tour funded by your own efforts, and that was truly inspiring and motivation for all of us, and like how we can be motivated and can do efforts in this work. So yes, thank you everyone for your active participation. Your presence and active participation have made even truly incredible and special. Thank you so much. I hope you leave today's event feeling inspired, motivated, and yeah, full of empowered. And stay curious, stay motivated, and yeah, innovative futures. Take care and stay connected. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you. Bye.